Okay, so last week जो ओडिशा जुडिशियल सर्विस रो मेंस एग्जाम हेतला तार किस्टा में मॉडल आंसर्स देखिबा जोटा कि ओजेएस में तो दरकार प्लस हमारे सिविल सर्विस में और फॉरेस्ट सर्विस में भी एटा दरकार। ओके, बेसिकली प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन आज हमें ए दुटा पार्ट देखिबा। तो को स्टैंडर्ड रो से क्वेश्चन पकोजी कोडा एटा ये ऐप रे अछि, ऐप रे लाइव रे अछि। ठीक है, सो ऑलरेडी ग्रुप रे नाले ऐप रो ये रे मु दे देछि तार क्वेश्चन पेपर टा तथापि एठी भी आउथर क्वेश्चन टा लिखा आइछि। You can access this or you can access the question paper also from the group or the app. Okay, এটা সে 323 ওয়ার্ড র প্যাসেজটা দেইছি। 323 ওয়ার্ড র প্যাসেজটা দেখি সে ক্লিয়ারলি ऐप रे जाइछि, ऐप रे एसएमएस जाइथिबो, ऐप रे जॉइन कर परिबो। ठीक अछि, एक्चुअली से गूगल मीट रो कैलेंडर लिमिट टा रीच हे जाइछि, सेटा 500 रु अधिक लिंक्स को जाउनी, सेटा ऐप रे अछि। तो ऐप रे डायरेक्टली जॉइन करि परिबो। ओके, सो 323 वर्ड्स रो देछि प्रेसिडेंट। ओके, 323 वर्ड्स ये देनी हमको काउंट करिया पड़ियो। तो 323 वर्ड्स रो पैसेज टा देछि। तापरे क्वेश्चन रे किंतु क्लियरली लिखा हिची राइट ए प्रेसी ऑफ 100 वर्ड्स। तुम से एबे 323 रो देथौ, 500 रे देथौ, 1000 रे देथौ, जेहेतु सी मते क्लियरली कहला कि आपण 100 वर्ड रो प्रेसी लिखिबे, तो मते 100 वर्ड रो प्रेसी लिखिबार अछि। हैला, ओएफएस रे और ओएस रे आपन को सेमती दिया ही नथियो कि राइट ए प्रेसी इन 100 वर्ड्स, से खाली लिखथियो राइट ए प्रेसी ऑफ द पैसेज। ओके, तेनु जदी वर्ड्स रे दिया हिची ताहले जति वर्ड रे कहूची प्रेसी सेति लिखियो, 1/3 रूल हमरो दरकार नहीं। बट जदी किछि कहूनी ताहले यू फाइंड आउट अप्रोक्सीमेटली केते वर्ड्स अछि। ओके, जदी गणी की बाहर कर देबे तो बहुत भलो, बेसी टाइम लागेनी। केमती गणीबे ना 2 पेज की 3 पेज रो पढथिबो क्वेश्चन पेपर रे, तो आपण देखिले केतेटा वर्ड हैला, 12टा वर्ड हैला, ताले क्वेश्चन पेपर रो ईच लाइन रो साइड रे पेंसिल रे ताको लिखि देबे। ओके, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कोजेटा 12 हैला, 11 हैला, 15 हैला। ओके, ताले मते लास्ट मु जस्ट खाली ऐड कर देबी मोर केते हैला। ओके, आउ सेटा कैन दैट इज रिक्वायर्ड। जदी सीए एठी तो देई देला 100 वर्ड रे लिखंतु, किंतु मते भी फाइनल लिखिया पड़िबो मो प्रेसी रे केतेटा वर्ड अछि। से 100 देइछि माने हमरो रेंज हैला प्लस माइनस 10%, मीन्स 90 रु 110 वर्ड्स भितर मो प्रेसी रहबार अछि। 150 वर्ड रो प्रेसी जदी लिखतिबी किछि लाभ होबनी। ओके, एरर लिमिट इज प्लस माइनस 10% ऑफ द लिमिट गिवन। हमको 100 वर्ड रो लिमिट दिया हिच, 10टा वर्ड अधिक हेले चलिबो, 10टा वर्ड कम हेले चलिबो। बुझ परले, देन 90 रु 110 भितर हेले चलिबो। तेनु सेटा हमको बाहर करिया पे पड़ियो। ओके, सो वेयर नथिंग इज गिवन यू यूज द 1/3 रूल। जदी से खाली लिखि जे राइट ए प्रेसी, देन आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द total length of the passage, then 1/3 of that plus minus 10%। हैला, जो एग्जाम रे देई दोची एति की वर्ड रो प्रेसी लिखंतु, से ता परे लेंथ रो किछि माने नाही, से जेते लेंथ हेतो मते तारी भीतर रखे। ओके, सो लेट अस देन कम टू द पैसेज। पैसेज टा आपण एते देख परे, एते म थोड़ा रीड कर देबी, स्लोली रीड करी, सो अंडरस्टैंड द कांसेप्ट। On reaching the age of 80, it is reasonable to suppose that the bulk of one's work is done, and that what remains to do will be of less importance। 80 वर्ष जाको हे गला, से ऑलमोस्ट तारो या सब लाइफ रे अचीवमेंट जा तारो इच्छातला करिया पे कि करि पारला कर पारला, बट टाइम था पाखर नहीं, सेटा से हिसाब से कहूछ जा बळी जेची करिया पे, दैट इज ऑफ लेस्ट इंपोर्टेंस। दैट इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। द सीरियस पार्ट ऑफ माय लाइफ एवर सिंस बॉयहुड has been devoted to two different objects, for which a long time remained separate and have only been in recent years united into a single whole। तांकर जो दीटा ऑब्जेक्टिव थिला लाइफ रे, सेटा प्राय अलगा अलगा थिला, किंतु ए लास्ट टाइम रे मन तांकर ए जो किछि दिन कि किछि वर्ष हैला, सेटा एबे से जो दीटा अलगा अलगा तांकर गोल्स के ऑब्जेक्टिव्स थिला, सेटा गोटे ऑब्जेक्टिव हे जिछ। I wanted on one hand to find out whether anything could be known, and on the other hand to do whatever possible towards creating a happier world। तो दीटा एम तांकर थिला कोन थिला, प्रथम on one hand
to do whatever possible towards creating a happier world seta gote thila, and to find out whether anything okay could be known, right? So ei dita takara aim thila. Knowledge, anything could be known mane kon, to get knowledge on something, knowledge को acquire करिबा सेटा तांकर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव थिला. सेकंड ऑब्जेक्टिव थिला एमती किछि काम करिबा जोतरे समस्त खुशी रहि पारे, एंटायर वर्ल्ड रो हैप्पीनेस रहि. Up to the age of 35 I gave most of my energies to the first of these tasks, means to acquire knowledge. 35 वर्ष पर्यंत knowledge acquisition रे से तांकर समयटा स्पेंड करे. ठीक अछि. I was troubled by skepticism and unwillingly forced to conclusion that most of what passes for knowledge is open to reasonable doubt. तामाने कौन ना सीए skepticism, okay, skepticism माने कौन, skeptic के जे सब जिंस को डाउट करे, okay, सीए गोटे जिंस दा कुआ हबो सी सेटा को ऑन फेस वैल्यू नहीं परिबो, सी skeptic की सेटा ये जहा कहउचंदी सेटा ओके प्राय भूल तो ठीक है तो बचे. ओके, तो skeptic रो काम हैला ताकू प्रूफ करिया पय पड़िबो कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस अ skeptic बिकॉज़ से प्रथम रो ही तार नेगेटिव एटीट्यूड थिबो. ओके, कि गोटे जिंसटे हबन. सो दैट इज तो सेगुडा देखि कि skepticism and unwillingly forced to the conclusion, ताको इच्छा नथला सेटा कंक्लूड करिया पय, किंतु ताको संगे जा जा हैला ओ से जा देखिले से हिसाब रे से कंक्लूड करले कि आमे जहा को नॉलेज कहउचू सेटा एक्चुअली नॉलेज न होई पारे, तार ऊपर रीजनेबल डाउट्स अछि. रीजनेबल डाउट्स अर्थ कोन ना सेटा सत्य कि नाही, ओके, ताकू चैलेंज करा जाई परिबो कि नाही सेटा, ओके, दैट इज ओपन, इट कैन बी चैलेंज्ड, राइट. I wanted certainty in the kind of way in which people want religious faith. तामाने कोन ताको कहर थला जो नॉलेज ता मते मिलला सेटा 100% ठीक हेते दरकार, that should be certain. से ऐसे कहउछन I wanted certainty in the way of which many people want religious faith. तो अन्य बहुत लोगों को रिलीजन ता जेमति पूरा यू नो एब्सोल्यूट किंबा पूरा सत्य दरकार, बहुत इंपोर्टेंस से माने दियंते रिलीजन को. ठीक सेमति मु कौन बेसिकली मत या दरकार थिला, मते जो नॉलेज ता मिलुची से नॉलेज ता ठीक थिबा दरकार. ओके, सेतरे किछि यू नो डाउट से तो रहया कथा नो, इट्स 100% समस्त एक्सेप्ट कर परथे सेमते. I thought that certainty is more likely to be found in mathematics than elsewhere. ओके, तो मैथमेटिक्स रे ऑब्वियसली गोटे फार्मूला में लिखिलु सेटा तो सत्य ही हेतिबो ना, मिछ तो हेतර बारिबो नि, राइट. तो सेटा से तो मैथमेटिक्स रे जहा अछि सेटा हला एक्चुअल नॉलेज, सेटा ट्रुथ, किंतु सेथरे भी से ताकर अलगा व्यूज रहला. बट I discovered that many mathematical demonstrations which my teachers expected me to accept were full of fallacies, and that if certainty were indeed discoverable in mathematics, it would be a new kind of mathematics with more solid foundations than those that had heretofore been thought secure. तामाने कोन ना मैथमेटिक्स सेटा ट्रू नॉलेज सेटा गोटे skepticism जोतरे रहिबा कथा न, किंतु से ताको निजे एक्सपीरियंस करी कि मो स्कूल रे कि जोटी से यूनिवर्सिटी जोटी पढतले ताको टीचर्स माने जा जा ताको देखेले आ जा टीचर्स माने एक्सपेक्ट करले कि तुमे एक्सेप्ट कर से ठीक अछि बोली मैथमेटिकल फार्मूलाज हो कि जा भी हो, सेतरे ताको कहया कथा कि सेतरे बहुत गुडे मत लागला भूल थिला. ठीक अछि. आ जदि भी हम एमती कहबा कि मैथमेटिक्स इज द ट्रू नॉलेज, देन इट हैज टू बी ए न्यू काइंड ऑफ मैथमेटिक्स, जोटा मते पढायला कि जोटा हमहु पढाउची सेटा न, बट न्यू काइंड ऑफ मैथमेटिक्स सेटा, ओके, खबर अछि, राइट. It would be in a new kind of mathematics where more solid foundations than those had been heretofore been thought to be secure. माने आउरी open to questioning, open to reasoning and logic. Okay. Then came the First World War, and my thoughts became more concentrated on human misery. तो 35 वर्ष पर्यंत education, knowledge, okay, education तो कोना knowledge acquisition से गला, तापर First World War आसी गला. Okay, तो सेतबे कोन चेंज हला ताकर more concentrated on human misery and folly. Folly माने कोन भूल. ठीक अछि कि लोक माने केमती हैरान होचंदी आउ लोक किछि लोकन को भूल पई. The people who are in power because of their mistakes, because of their thought process, whatever, बहुत अन्य लोक किंबा बहुत innocent लोक से माने हैरान हेले. ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. Neither misery nor folly seems to me any part of the inevitable lot of man, and I am convinced that intelligence, patience and eloquence can sooner or later lead the human race out of its self-imposed tortures, provided it does not exterminate itself meanwhile. तेनु ताको कहया कथा कि मिजरी और फॉली, ओके, तो सेटा बेसी सेटा किछि डेंजरस नो कि, ओके,
does not to me any part of the inevitable lot of men. ठीक अच्छे तो कौन टा थाले दरकार वर्ल्ड पीस ପାଇଁ कि जति ह्यूमन रेस टा गोटे बेटर पोजीशन रे रहइबो इंटेलिजेंस पेशेंस एंड एलोक्वेंस ओके ए तीनटा जिंस रहले आज ना कि खाली ह्यूमन रेस ओके इट विल यू नो कम टू अ बेटर प्लेस बट से गोटे जिंस कहउचंदी कि सेई जो बाट को आसीबा आगरु ता मझिरे जेंति से निज निज को डिस्ट्रॉय न कर दियन okay that is what he is saying the author is saying on the basis of this belief I have had a certain degree of optimism although as I have grown older the optimism has grown more sober and the happy issue more distant okay optimism has grown more sober माने कोन ना से जो तांकर से भाबुतिले हां निश्चित हे जिवो सेटा आस्ते आस्ते आउरी मॉडरेट हे जाउछ ठीक अछि सोबर माने कोन ना बहुत खुशी नुह किंबा समवन जारो एक्सप्रेशन की फीलिंग ता बेसी बैलेंस थाए ठीक अछि तांकर से एक्सपीरियंस ता नाही कि हां एते निश्चित हबो ओके एज सहित सेटा आस्ते आस्ते इट हैज मेलोड डाउन ओके the optimism has grown more sober and the happy issue more distant but I remain completely incapable of agreeing with those who accept fatalistically the view that man is born to trouble okay ta mane kono se fatalistic concept ta कि मनुष्यर जीवन टा है पेन पे ओके जन्म नहीं छन जहां भी हेले तुमको कष्ट भोगिया पे पड़िबो ओके आउ सेटा यू हैव टू एंड्योर दैट लाइफ लॉन्ग से जिंसटा ओके से जो फैटलिस्टिक थ्योरी सेटा से ओके एक्सेप्ट करना कंप्लीटली इनकैपेबल ऑफ अग्रीइंग ओके हां इट इज डिफिकल्ट से पे तांकर जो ऑप्टिमिज्म ता थिला सेटा आस्ते आस्ते सोबर हे जाई छी ओके इट इज सोबर डाउन मेलोड डाउन बट स्टिल देन ओके तांकर होप अछि 323 वर्ड्स रो तनु एटा कोन एटा गोटे डायरेक्ट एमती गोटे गोटे इश्यू पर गोटे पैसेज नो इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ए पर्सन ठीक अछि जदि हमें एनालाइज करिबा आरो वोकैबुलरी एते डिफिकल्ट भी देनी ना ठीक ठाक अछि बहुत इजी भी नो बट इट इज मॉडरेट ओके ए वर्ष जो ट्रांसलेशन पड़ी छी नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करबी ट्रांसलेशन टा देखिबा ट्रांसलेशन टा बहुत हेवी पड़ी ओके तार you know the vocabulary which has been used so 323 words रे मते कहू छी केते 100 words रे ओके मते ताको लिखिबार अछि 100 in 100 words I have to write so first कोन हमर रूल रो प्रेशर हम आपन कहितली you have to write a draft first draft गोटे कर देबे सेटा स्टेप मार्किंग पे बहुत दरकार बहुत जण डायरेक्ट प्रेस भी लिखंती बट देखंतु प्रेसटा 100 वर्ड रो एतिकी हबो ओके एटा ओजेएस रेटा 25 मार्क्स रो पडुची डिफरेंट एग्जाम्स रे डिफरेंट मार्क्स अछि कोटी 20 कोटी 15 क्या भी एतिकी लिखि देले कि आउ 50 100 वर्ड लिखि देले ठीक अछि depending on the content and all I can get marks but if I add a draft यदि मु लिखुची तले जे स्टेप मार्किंग दा रोए 2-3 मार्क रो डिफरेंस आनि परियो okay draft केमति लिखाबे that we have you know discussed in the theory class तो exactly सेमिति ही आपन को लिखियार अछि okay next the draft रे कोन लिखा हबो ना draft basically you just write the जोडा एग्जीक्यूटिव समरी माने जोडा इंपोर्टेंट जिंस अछि पैसेज रे खाली सेटा कॉपी पेस्ट करियार अछि तापरे ताको पैराफ्रेज करी गोटे टाइटल सप्लाई करिवे तो तापरे अपना ए मॉडल प्रेसी किंबा फेयर प्रेसीटा लिखिबे titles lot of titles are there you know about the titles we are talking about that is the 3+1 rule okay that is basically charita word भितरे excluding this connectives and all सेति की रखिले गोटे भलो क्रिस्प टाइटल रहइबो जोटा कि से देछि reflections on true progress okay reflections on true progress seta se tara dechi okay so the author upon turning 80 reflects on his dual life pursuits seeking certain knowledge and fostering a happier world initially he thought certainty in knowledge particularly in mathematics however he often found fallacies in accepted mathematical proofs suggesting that the need for a more robust foundation. The First World War shifted his focus to alleviating human suffering and irrationality, firmly believing that neither is man's inescapable fate. He holds that intelligence, patience, and eloquence can uplift humanity, provided self-destruction is avoided. While aging has sobered his optimism,
he rejects the fatalistic view that humans are inherently destined for hardship. Okay, 98 words रे हमें लिखे हमर जो रेंज टा थिला 90 words to 110 words तो ता भितर हम अछु. ओके मे बी हमें आउ गोटे लाइन भी किछि बाहर कर लिख परथांते जोटा कि 107 108 words को करथांते बट इट्स एनीवे. ओके सो स्ट्रक्चर ता मन रखिबे गोटे पैराग्राफ रे लिखा हबो. ओके सिंपल इंग्लिश यूज हबो मोटे सीए जदी बहुत ही हायर वोकैबुलरी यूज करिछि मु आ ताको रेप्लिकेट करिबे. ठीक अछि मु जेतिकी जेते सिंपल लिखिबी मार्क्स सेतिकी अधिक आसीबो. और बेसिक रूल्स ऑफ प्रेसी व्हिच वी हैव स्टडीड इन द थ्योरी क्लासेस सब मते मेंटेन करिवार अछि. 10 लाइन रो 10 वर्ड रो गोटे लिखिबी टाइटल तो सेतर सब मार्क कटिबो. ओके जस्ट फॉलो द 3+1 रूल. ओके फॉर टाइटल्स तापरे एठी देइनी किंतु आपण गोटे ड्राफ्ट करिवे ड्राफ्ट पर फेयर प्रेसीटा करिवे लिखि सारला पर यू राइट देयर 98 वर्ड्स. ओके बहुत कम टाइम लागिबो एटा गणिबा पई तेनो एप्रोक्सीमेशन दरकार नाही. तथापि एप्रोक्सीमेशन मेथड टा आपण जानचंती इनिशियली दी लाइन की गोटे लाइन मझिरु गोटे लाइन लास्ट बट वन रो गोटे लाइन एवरेज नंबर ऑफ वर्ड्स केते अछि बाहर कर देबे केतेटा लाइन अछि इनटू कर देबे लास्ट लाइन रे केतेटा एड्स अछि वर्ड्स अछि ऐड कर देबे तो जण ओवरऑल आपण गोटे मिल गला. बट दिस इज मैंडेटरी. ठीक अछि तो एटा लिखिबा एथरे केतेटा वर्ड्स अछि आपण लिखि जंती. This is very important, especially in those questions where they have asked you to write within a particular word limit. ठीक अछि तो आपनकर 1000 रु 1200 वर्ड भीतर गोटे एसे लिखंतु. ठीक अछि तो सेठी अब गणित तो पारे 1000 1200 वर्ड अप्रोक्सीमेट लिखिबे. ओजेएस रे पचारबे 150 वर्ड रे एसे लिख तो से माने लिखिबे केति की वर्ड रे लिखा हैला लास्ट बुझि परबे तो कीप दोस थिंग्स इन माइंड. Any doubts in the Prezi? ताहले मते कोंतु if you have any doubts in the Prezi. Else we will go to the comprehension. Comprehension रे किछिटा वर्ड आपनकर टिके हार्ड तो नो तर वोकैबुलरी टिके भलो रे सेटा देछि. ओके सो नाउ कम टू द comprehension. तो आपन जोटा देछि सेटा देखि देबे और you have the question paper telegram channel रे भी देछि question paper टा आपनकर कोंतु नहीं टाइटल टा बहुत गुड ही पर एठी दियाला रिफ्लेक्शंस ऑफ ट्रू प्रोग्रेस आपण आ गुटे कोन टाइटल दे पारे. टाइटल लिखिबार मु देइथिली ए थ्योरी क्लास रे 4-5 टा पॉइंट्स हाउ टू सिलेक्ट द टाइटल. मु कहली फंडामेंटल पॉइंट टा कहूची द क्रक्स आपण जानिले कि मेन थीम ऑफ द पैसेज टा कोन प्रेसी रो मेन थीम टा कोन से को सब्जेक्ट ऊपर प्रेसी टा लिखा है और कि पैसेज टा लिखा है जो आपण टाइटल देबे that should properly encompass किंबा सेथरे आपनकर जो सेंट्रल पॉइंट और सेंट्रल ओके इश्यू ऑफ द पैसेज शुड बी कैप्चर्ड. आपण जहां भी एठी एक्चुअली कोन होची से कोन बेसिकली कहउछन कि मु 35 वर्ष पता एया कली तापर एया तो ताको लाइफ रो गोटे से स्टोरी टाइप रो से कहउछन कि एक्चुअली ओके लाइफ रे ट्रू प्रोग्रेस कोन. सो ही इज नाउ 80 प्लस तेणु तांकर से 80 इयर्स रो एक्सपीरियंस टा कहउछन ताकू कोन कहआ जाय रिफ्लेक्शंस. ओके सेटा फर्स्ट लाइन रे से कहि दैछन. ओके हां हबो माय थॉट्स एट 80 हेले हबो किछ असुविधा नै. ओके ऑलवेज रिमेंबर एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिंस जो आपनकर टाइटल देबे सेटा फर्स्ट पर्सन रे केबे हुएनी माय थॉट्स इन 80 हबन. ठीक अछि फर्स्ट पर्सन रे केबे हबन सेटा. सो जेमती आपण प्रेसी रे कोन सी सेटा एंटायर आपनकर पैसेज टा अछि फर्स्ट पर्सन रे किंतु आपण जेते लिखुचंती ताको इनडायरेक्ट स्पीच करिकि ओके तारो यू आर नॉट राइटिंग इट इन फर्स्ट पर्सन. ठीक है तो थर्ड पर्सन रे आपण लिखुचंती हाँ ऑथर एट स्टार्टिंग कले तो ऑथर अपन टर्निंग 80 बुझी परले तो तेनु टाइटल टा भी शेयर रहबो जनरल टाइटल रहबो. ओके हाँ के पचार कोन डाउट
बहुत बड़ हो गला सेटा आपण थ्योरी क्लास रे थोड़े देखिबे आरो रूल टा कोन टाइटल रो गोटे हमर 3+1 रूल थाए 3+1 रूल माने तीनोटी वर्ड मैक्सिमम आउ गोटे वर्ड दे हबो ऑन द एगुडा सब काउंट हुएनी एठी तीनटा अछि रिफ्लेक्शंस ट्रू प्रोग्रेस तो 3+1 को एटा हमर ओके इट बेसिकली agrees to our rule of 3+1 ओके आउ जदि मो गोटे 10 लाइन रो 10 वर्ड रो गोटे देबी गोटे टाइटल तो सेथर मार्क मोर कटिबो ठीक अछि तो एटा मन रखिए टाइटल टा शॉर्ट हेतिबा दरकार ओके क्रिस्प हेतिबा दरकार should directly be related to the central theme of the passage and should not be too witty jette simple language रे jette straight forward दिया हबो टाइटल टा सेते अधिक मार्क मिलिबो अपन जदि विट और ह्यूमर लगै कि सटायर लगै कि किछि गोटे टाइटल देबे मे बी सेटा बैकफायर करिवो ओके तेनु सिंपल पैसेज देबे हाँ प्रेसी रे देखिबे इंग्लिश रे ऐप रे अछि सेटा इंग्लिश रो सब वीडियोस रे देखिबे जतले प्रेसी स्टार्ट हेछि फर्स्ट क्लास रे प्रेसी रो रूल्स उडा कोइछि तो सेठी एथरे हम डिस्कस करिछु सेगुडा ओके so you write the number of words that is mandatory okay now come to the passage रे कोन ना हमरो किछि ले निजो of course सेटा one of the fundamental माने requirements of both Precis as well as reading comprehension ओके सेठी आपण कांसेप्ट टा बुझिले लेखिबे निज ना माने निज भाषा रे पैराफ्रेज करिवे सी जहा लेखा जे ताको कॉपी पेस्ट कर देले नाही प्रेसी रे आंसर मिलिबो नाही कॉम्प्रिहेंशन रे आंसर मिलिबो माने मार्क्स मिलिबो प्रेसी रे भी मार्क मिलिबो कि कॉम्प्रिहेंशन रे भी मार्क मिलिबो बुझ परले ताकू निज लैंग्वेज रे ही लिखिबे बुझी गले जिंसडा देन राइट इन ओन लैंग्वेज कोठी ओन लैंग्वेज रे लिखिबेनी मु कहली जो ड्राफ्ट टा करिवे जो फर्स्ट ड्राफ्ट टा करा हुए ड्राफ्ट रे कोन हुए ना एठी धरंतु 40 टा लाइन देछि 40 टा लाइन भितर सपोज ए लाइन टा मु भाबिली बेसी इंपोर्टेंट तो मु जस्ट खाली कॉपी पेस्ट कर देबी लाइन एते जा लेखा हिची मु एग्जैक्टली से लिखि देबी ओके सो दैट ताकू तापरे मु चेंज करिवि तो जे 40 लाइन भितर मु डिसाइड कली कि 1/3 तो परिवार अछि 13 टा कि 14 टा लाइन हैला मोस्ट इंपोर्टेंट से 13 टा कि 14 टा लाइन मु एग्जैक्टली से ये रे ड्राफ्ट रे लिखि देबी तापरे ड्राफ्ट को कन्वर्ट कली फेयर प्रेसी को से जो ड्राफ्ट थिबो सेटा एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज रे रहबो जस्ट कॉपी पेस्ट ओके से पे कोची ड्राफ्ट कले कोन ना स्टेप मार्किंग मिलिबो खाली एई 100 वर्ड लिखि देली आ एक्सपेक्ट कली 25 मार्क ओके ओजेस में कोची बट सब एग्जाम पे सेम ठीक अछि पिला खाता देखांदी से सब तो ठीक थिला आ 25 रु 14 देइचंती 12 देइचंती 10 देइचंती अरे तुम लिखिजो तो तार सब प्रोसेस अछि जेंति स्कूल रे कोय ना स्टेप मार्किंग्स थाए तेणु सब बेले आपण जहाँ भी हो स्कूल रे जतरे पढुतले केतेटा ड्राफ्ट करथले दीटा ड्राफ्ट होतला इफ यू रिमेंबर इन प्रेसी जदि देखिबे जो भलो भलो बही अछि हिडन ट्रेजर करिका प्रेसी रे दीटा ड्राफ्ट रे गोटे फर्स्ट ड्राफ्ट रे गोटे सेकंड ड्राफ्ट रे तापर फेयर प्रेसी रे कॉम्पिटिटिव परीक्षा रे हम पाके सेमिति समय नाही तीनटा दीटा ड्राफ्ट करी पुणे फेयर करिया पे गोटे ड्राफ्ट तो करी होबा ओके तेणु से फर्स्ट ड्राफ्ट रे जहाँ जहाँ इंपोर्टेंट लाइन्स अछि ताकू जस्ट कॉपी पेस्ट करी रखि देबे सेतरे मो डिटेल्स रे देछि तापर जो सेई जो पीडीएफ रा यूज हेछि थ्योरी क्लास रे गोटे ऐप रे अछि सेतरे देखिबे से प्रथम रे करि देछि आपन को पई केमिति आउटलाइन टा दिया से तब आउटलाइन लिखिछि तो फर्स्ट ड्राफ्ट को जाय कि खाली ड्राफ्ट भी कोना मतलब सेकंड ड्राफ्ट को तो फर्स्ट ड्राफ्ट लिखिर किछ दरकार नहीं खाली ड्राफ्ट ओके कि के जन तो रफ भी लिखते रफ टा बहुत ही माने गोटे ये टाइप रो लैंग्वेज तो ड्राफ्ट ही लिखिले ठीक तो ड्राफ्ट प्रेसी तापरे आसिला हमर फेयर प्रेसी विद द टाइटल ओके आउ कोन डाउट अछि कोन प्रेसी रे सेटा थारे पढी दियंतु हैला एटा एक्चुअली मु थ्योरी क्लास नोनी एटा मु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो सॉल्यूशन टा करछि तो एते कोन ना हमर थ्योरी क्लास टा कंप्लीट हे गेला पर मु जानिली रूल्स उडा तापरे अपन तरीके करि माने करेंटली जो एग्जाम्स होची ग्रुप ए एग्जाम्स उडा ओजेएस हे गला कि जाबी तो सेथरे केमती कोन स्टैंडर्ड रो क्वेश्चन आसुची सो दैट इज रिक्वायर्ड फॉर आवर अदर ग्रुप एग्जाम्स आल्सो सिविल सर्विस पे फॉरेस्ट सर्विस पे सेम थिंग्स ओके so now come to the next part against this panorama of nations moral and religions rising and falling okay morals and religions rising and falling
the idea of progress finds itself in dubious shape. It is only the vain and traditional boast of each modern generation. Okay, is it only the vain and traditional boast of each modern generation? Since we have admitted no substantial change in man's nature during historic times, all technological advances will have to be written off as merely new means of achieving the old ends. तानसे कहया कथा कि basic changes, okay, एड़ा खाली गोटे देखिया पई actual जोड़ा changes सेमति तो किछि होउनी. Okay, सेइत पई से लिखिछि, since we have admitted no substantial change in man's nature during historic times, all technological advances will have to be written off as merely new means of achieving old ends. आमे जा एबे अचीव करा पे चाहूछु, ओके, आपण को नुआ टेक्नोलॉजी आनुचनी कोन कामटा सहज होई जिवो. ठीक अछि, आपण कहउछन मु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करी कोन होबा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करले आपण कामटा इजी होई जिवो. ठीक अछि, कामटा इजी आगुरु भी होतिला, राइट. जेतेबेले आमे सुनि भी नथिलु कि कोन केमति टेक्नोलॉजी अछि, गोटे गोटे मंदिर फॉर एग्जांपल यू नो अबाउट द बृहदेश्वर टेंपल. ओके, तो राजा राजेश्वर टेंपल भी कह जाए. से टेंपल ऊपर एते बड़ पत्थर रखा केमति गला आउ कैलकुलेशन जदि हमें करिबा ताकू माने ताकू रैंप पकई कि ताकू नै चंती माने लंबा सीढ़ी करी तो से सीढ़ी केते किलोमीटर रो हवा दरकार आउ केते लोक लागी कि एते बड़ पत्थर को उठै दिबे. ओके, सो इट रियली यू नो इज माइंड बॉगलिंग. ठीक अछि, से माने भी तो सेतेबेले से ही करथिले ना कामटा इजी करिया पे से माने भी किछि मशीन्स यूज करथिले, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस यूज करथिले, राइट. The acquisition of goods, the pursuit of one sex by other or by the same, the overcoming of competition, the fighting of wars, etc. जहाँ जहाँ एबे होची यूक्रेन रे हला कि जोटी हला जहाँ जहाँ आपण करछथि acquisition of goods. ओके, तो मोर फर्स्ट सैलरी आसला मो माइंड रो फर्स्ट काम हला मोर एप्पल गोटे प्रथम एप्पल किनिबी सेउ नुह आईफोन. ओके, एप्पल आईफोन प्रथम गोटे किनिबी सेटा मोर फर्स्ट सैलरी रु. ओके, तो सेटा आसला acquisition of goods, pursuit of one sex by the other. एठी सटायर मारी की कहला और by the same हेलानी आजिकल नो सेतबेले भी थिला. ओके, सेम सेक्स मैरिजेस की सेम सेक्स रिलेशनशिप LGBTQIA जहां आपण सब पढुचंती, राइट. तो से टाइम रे भी थिला. the overcoming of competition, how to beat the competition. Okay, the fighting of wars, so से टाइम रे भी थिला आज भी अछि. तो डिफरेंस कोन हला? One of the discouraging discoveries of our disillusioning century is that science is neutral. Okay, science is neutral. त माने कोन ना साइंस आपन को नॉलेज ता दे देला, एबे आपन ताको भलो काम पे यूज करंतु कि खराब काम पे यूज करंतु सेटा से तार सेतरे कि जेउ. ओके, हाथ रोनी. It will kill us as readily as it will heal us and will destroy us for us more readily than it can build. एटम बम हो एबे सब यू नो आपन बायोलॉजिकल वेपन्स रोची. इवन को जण कहउचंदी कोविड ता लैब मेड कोनोसी गोटे कंट्री जानी कि न जानी कि जेमति भूल रे बाहरी गला ताइरो एंड सो मेनी पीपल पेरिश्ड. how inadequate now seems the proud motto of Francis Bacon. Francis Bacon कोन कहइतले knowledge is power. Okay, so according to the author it is completely inadequate now. Knowledge is not power. Sometimes we feel that the Middle Ages and Renaissance, which stressed mythology and art rather than science and power, may have been wiser than us, who repeatedly engage our instrumentalities without improving our purposes. So, amotu better our ancestors. Okay, जो माने Renaissance age थे कि Middle Ages थे, Renaissance रे कौन इतना? से माने true knowledge टा discover करें भी चाहते थे. ठीक है तो जहाँ किए चर्च की कौन कहउचंदी कि अर्थ चारिपटे entire you know so planet sun fun se mane बुलुचंदी अर्थ चारिपटे. बट नो कॉपरनिकस अदर तांका आगुरु हमरो तांकर बहुत आगुरु कॉपरनिकस बाकी जेते जणा सब बाहर कले ता बहुत आगुरु हमरो इंडियंस माने सेटा जानथिले. हमरो एठी हमरो साइंटिस्ट माने ओके ऋषिज माने सेटा लिखि जंदी हमरो इन आवर वेरियस you know shastras and even in our various other books related to science and all. So whatever, तो सेमानकर सिचुएशन मच बेटर थिला. ओके, आमे ए एज रे कोन करूछु, वी आर एंगेजिंग आवर इंस्ट्रूमेंटलिटीज विदाउट इंप्रूविंग आवर पर्पस. नुआ टेक्नोलॉजी आसुची, अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी रे लाभ कोन हो? ठीक है, इट विल ब्रिंग लॉट ऑफ प्रॉफिट टू सम पीपल.
Okay, but what will happen to a lot of other people? ठीक अच्छे गोटे कंपनी को $1 कि बिलियन रो लाभ हम जमी यूएस रे अमेजन तार शिपमेंट गुड़ा आरंभ करदे थ्रू ड्रोन ठीक अच्छे ड्रोन आपंकर एक्जाक्ट लोकेशन में जाकि मेसेज आसूँ ड्रोन पहुंचो गोटे मिनिट रे ओके आप घर बाहर पड़ो सी आसिक आपको आइडेंटिफाई कर देदेकी पलाऊँ तो एथर कौन हो ना लोक रखा दरकार नहीं लोक जॉब्स गला ओके करंटली 3 दिन आगु गूगल हैज फायर्ड ओके सबू कंपनीज फायर कर जस्ट रिसेंट न्यूज बोली मु कहली गूगल तार अनस्पेसिफाइड नंबर ऑफ वर्कर्स को फायर कर देला कहीं से जो मैंने सब आईटी सेक्टर की घर थे जानते बहुत गुड़े एमती कम होता जोटा आजिकल एआई निजे कर दउछि चैट जीपीटी हो कि चैट जीपीटी तो मोर जनरल डोमेन स्पेसिफिक एआई भी यूज होछि तो से माने आराम रे से काम कंप्यूटर्स को दे दउछन्ती कंप्यूटर्स तो काम कर ठीक अच्छे लोक दरकार नहीं से आगुरी टेस्टिंग दरकार थिला अलग बहुत सो एबे से सब जिन रोची तो अगेन आमे जो कहीं कथाटा कहली से जो फर्स्ट से जो लास्ट जिनटा कहूँ कि वी आर ओके एंगेजिंग आवर इंस्ट्रूमेंटालिटीज आम रिसोर्सेस आम टाइम आवर यू नो थॉट प्रोसेस किंतु से जो आउटकम टा हबो ओके सेटा बेनिफिट का करियो विदाउट इंप्रूविंग आवर पर्पसेस और आवर प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्निक हैज इन्वॉल्व सम टिंक्चर ऑफ इविल विथ गुड तेणु जो कमटा 5 दिन होता है 15 घंटा गला दैट इज गुड इविलटा कौन तापाई हजार हजार लोक दे इधर हैव टू रीस्किल देमसेल्व्स जो पुनी पैसा दरकार दिए दरकार जहाँ भी और से सब बड़े अपडेटेड होके रहे सो से जॉब पड़ेब ओके बहुत ही कम कंपनीज अच्छा जो मैंने रिस्किलिंग करती ओके बड़ बड़ कंपनीज थे जो लोक को हायर करदे सी नॉर्मली एमती बाहर करदे तो ठीक अच्छे डोमेन चेंज है तो टाइम देवे 3 मास गोटे कोर्स कर कंपनी 50% दूसरी तुम्हें 50% दियो नुआ कोर्स जहाँ भी डिमांड अच्छे पुणी से पूर्ण हो गोटे टाइम पर ओके तो रीस्किलिंग सब आपको करने पड़ो से डोमेन से ओके आवर प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज इन्वॉल्व सम टिंक्चर ऑफ इविल विथ गुड भल तो होची सहित खराब भी होची ओके और आवर कंफर्ट्स एंड कन्वीनियंसेस में हैव वीकेंड आवर फिजिकल स्टैमिना एंड आवर मोरल फाइबर ओके तो मोरल फाइबर भी वीक हो जाउची प्लस फिजिकल स्टैमिना भी वीक हो जाउची एबे तो पैम्पर करने सब प्रकार जिनस अच्छी ओके फॉर एग्जांपल एबे फैन लाइट भी रिमोट रे चलला और एमती भी अच्छी कि जोटा कि साउंड असिस्टेड आपण ताली मारले ओके कि चुटकी बजेले से तरह लाइट लगी जिवो राइट इनफैक्ट सब देयर आर प्लेसेस इन हॉस्पिटल्स एंड ऑल जोठी कि जो पेशेंट्स मानक आगुरी नर्सेस दरकार होते फीडिंग एबे रोबोटिक आर्म्स यूज होची ओके नर्स टा कौन कर 10 सेकेंड कि 15 सेकेंड रे स्पून टा नहीं मुहर पसैब रोबोटिक आर्म से सेटिंग कर दे 20 सेकेंड रे थरे पसैब थरे मुह पोछिब ओके तो आर्म रे दीटा जिनस लगी थरे मुह पसैल ओके मझे यदि किसी भूलभाल हो गला ओके तो से गुड़ा भी अच्छे धरत मुझे माने टिके चेंज करदेली पोजिशन मो मुहटा ऊपर को पड़ला से तो सेंसर रे ओके ये करके मतलब मोर ही पसैब खाइबाटा but the thing is that what it is saying okay our comforts and convenience तो हमको comfort convenience सब सुविधा हमको मिल जाउची एथरे असुविधाटा कोन होची फिजिकल स्टैमिना तेणु बहुत गुड़े लाइफस्टाइल डिजीजेस आसी गलानी एंड आवर मोरल फाइबर सब जिंस जेतु हाथ काम करे मिलुची मते गोड़ बाहर करके किछि काम करिया पे पड़ो एवरीथिंग बिकॉज ऑफ साइंस एंड ऑल ओके मते मिल जाउची सो एई दिनसडा ता ऊपर भी से गुरुत्व दोचंती We have immensely developed our means of locomotion, but some of us used to facilitate crime and to kill our fellow men on ourselves. Locomotion amara body chi. Suppose, as you know, US ro bomber fleets अच्छी B bombers बहुत प्रकार रो B bombers तांकर अच्छी केते विषय हमें जानी लुबी. Any point in the world within 15 to 30 minutes can be destroyed by them. Suppose they are equipped with nuclear missiles and nuclear weapons. Anywhere in the world they can reach in around 30 minutes. Okay, तो सही टाइप रो जिनस से कहूची आमे लोकोमोशन बहुत बढ़ी देछु हमरो आगुरु जो बुला बुली करिवार मु एठू पहुंचबी गुजरात मते आगुरु बहुत टाइम लागुतला ओके एबे ट्रेन हे गलानी फ्लाइट हे गलानी तो इजीली मोर लोकोमोशन इंप्रूव करछि बट सेटा को यूज करके ओके नेगेटिव तार एस्पेक्ट्स भी लोक माने करछन्ति वी डबल ट्रिपल
okay, centuple and speed, but we shatter our nerves in the process and are the same trousered apes at 200,000 miles an hour as when we had legs. Okay. ताने कौन ना कथाटा हला इंटरनली मनुष्य किसी चेंज है ठीक है तमें जिते जोरे जाई पारू कि जहाँ भी करी पारू वी आर दो पर्यंत हम थॉट प्रोसेस टा भलो हबनी कि दुनिया रो भलो हो ओके से पर्यंत नथिंग हैज चेंज आगुरु गोटे अलग वे रे होतले एबे अलग वे रे होची बट कांसेप्ट शेयर होइछ we upload the cures and incisions of modern medicine if they bring no side effects worse than the malady okay ता माने कोन ना जहाँ डिजीज है ताको जदी सॉल्व हो जाउची सेटा तो बहुत भलो ठीक अछि हम मानि दउ सेटा भलो केते केते जगह रे कोन तर बहुत साइड इफेक्ट्स होची फॉर एग्जांपल कैंसर क्योर कैंसर रे हमें जतले तार जा केमोथेरेपी की जहाँ भी हमें नउछु तार बहुत ओके साइड इफेक्ट्स होची we appreciate the assiduity of our physicians in their mad race with resilience of microbes and the inventiveness of disease जेमति कि नुवा मेडिसिन्स बारिबो जोटा कि रेजिस्टेंट थिबो नुवा नुवा माइक्रोब्स ओके तपर माइक्रोब्स माने भी से हिसाब रे इवॉल्व करछन से माने भी ड्रग रेजिस्टेंस ताकर बढ़ुछ हमें गोटे नुवा गोटे बार कलो मेडिसिन ताको खाइ देलु हमरो इम्यूनिटी बढ़िला नेक्स्ट जो जनरेशन ऑफ ओके माइक्रोब्स बाहरले से माने आम मेडिसिन रो तोड़ बाहर करके बाहर पुणी नुआ मेडिसिन बना आउरी हाई पावर ओके तो ओवरऑल एटा आम ऊपर कोन ओके इफेक्ट पकोची ता ऊपर से कोची ओके we are grateful for the added years that medical science gives us if they are not burdensome prolongedness of illness disability and gloom तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे बहुत बढ़ी जाइए फॉर एग्जांपल ये 2-3 दिन आगु गोटे एबोर्जिन्स को विषय रे गोटे डॉक्यूमेंटरी देखुली तो एबोर्जिन्स मानकर नॉर्मली 40 इयर्स ताकर थिला लाइफ एक्सपेक्टेंसी एबे 70 प्लस हे गला ऑस्ट्रेलिया ठीक अछि तो ठीक अछि ताकर यू नो बेटर हेल्थ केयर सेगुडा ठीक अछि असुविधा नहीं किंतु ता से सब जिनसर सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस रे से तापरे तार इफ्स एंड बट्स टा लागि दउछन जो एबे कथाटा भाबंतु आगुरु धरंतु 60 65 70 थिला लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया रे धरंतु एबे गोटे नॉर्मल मिडिल क्लास लोक से 80 90 इयर्स पर्यंत पहुंच सेटा बहुत भलो कथा ड्यू टू हेल्थ केयर एंड अदर्स बट अलग जगह रे माने इन फ्रॉम ए डिफरेंट व्यू सेटा तार भलो टाइम की खराब टाइम दैट वी हैव टू सी मोस्ट ऑफ यू नो द पीपल आर अलोन पिला माने बाहर को पढौचंदी ओके सी एका रहले आउ जदी ता भीतर विडो की विडो थिबे से पूरा एका ही रही गले जदी ताकर यू नो पार्टनर नांदी राइट तो से सबु जहां हमर भलो अछि जोटा आगे से कहितला कि हमर गुड और इविल एका संगे रहि जाय सो सबु गुड पई गोटे इविल भी दोछि राइट we have multiplied 100 times our ability to learn and report the events of the day and the planet but at the same we envy our ancestors whose peace was only gently disturbed by the news of their village माने न्यूज़ पता कहूची एबे न्यूज़ रे भाई को वाला दुकान रे क्वेश्चन पेपर मिलुची से ताठू आरंभ करिकी ओके मांकड़ो ड्रेस पिंदी की पळे आसला कि कोन से भी न्यूज़ हे जाउची ओके और भी कोन कोन न्यूज़ होची भगवान जानते तो we are exposed to lot of types of news ठीक अछि इंफॉर्मेशन ओवरलोड हे जाउची हम ऊपर सो मच बेटर कंडीशन रे हमर एंसेस्टर्स माने थिले जांतु से लोकली कोन हला ताको गारे या असुविधा हला से माने सीटा जानथले तो गोटे रु भलो आ गोटे रु खराब तो ए पूरा एंटायर पैसेज टा से हिसाब रे देछि ओके we have laudably bettered the condition of life for skilled working men and the middle class laudably माने से प्रेज करूछथि ओके he is lauding us better the condition of life for skilled working men and middle class जो माने काम करछंती working class middle class लोगों को पई हमरो living conditions better ही जाई health care हो अलग भी जिंस हो but we have allowed our cities to fester with dark ghettos and slimy slums okay ghetto माने कोन ghetto means गोटे particular रिलीजन हो कि गोटे पर्टिकुलर कम्युनिटी हो सेही माने ही सेठी रुहन समस्त सेठी रुहन सेटा अलग गेटो स्लम्स माने हमर बस्ती गुडा सब जगह रे पळे आउछि त माने कोन देयर इज अ स्टार्क कंट्रास्ट बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट्स बुझि पाले से जिनसटा से सब स्टेटमेंट तारा कहउछि ओके वी फ्रॉलिक इन आवर एमांसिपेशन फ्रॉम थियोलॉजी कोन स्टडी ऑफ रिलीजन इज कॉल्ड थियोलॉजी We frolic in our emancipation from theology
but we have developed a natural ethic, a moral code independent of religion, strong enough to keep our instincts of acquisition, okay, uh, pugnacity and sex from debasing our civilization into a mire of greed, crime and promiscuity, right? So amara moral principles, simply called moral principles, okay, these are derived, some are derived from religious sources, religion and at the same time some are also derived from secular sources and are universal. For example, kindness, এটা यूनिवर्सल जिनस गोटे लोक कि गोटे एनिमल जो हैरान होची आपण जो देश रे थांतु जो धर्म रही थांतु आपण धर्म आपण देश आपण कम्युनिटी सब से कहूँ कि जे नीड रे अच्छी एनिमल हो ह्यूमन बीइंग हो ताको हेल्प करो, ठीक है? So these are basically, these are universal. Have we really outgrown intolerance or merely transferred it from religious to national, ideological or racial hostilities? तो सेटा से क्वेश्चन पचारना कि आमे इंटॉलरेंस को कमेइछु ना एक्चुअली इंटॉलरेंस बढ़ी जाइछ, ओके? सो रिलीजियस इंटॉलरेंस को हमें ट्रांसफर कर दोछु नेशनल लेवल रे, नेशनल इंटॉलरेंस, ये पाकिस्तान, ये इंडियन, ये एटुअस्ट, ये सेटुअस्ट देश को नहीं कि आइडियोलॉजिकल, यू राइट विंग, आई एम लेफ्ट विंग, ये आलमोन, ये एथिस्ट, ये ओके भगवान को मानु छी, ये मानु नहीं जा भी, राइट? एंड रेशियल हॉस्टिलिटीज, तो बहुत गुडे कंट्रीज हमर सेमती कास्ट अछि, सेमती बहुत जगह रे रेसेस, तो ये काला कलर, ये धला कलर, ये येलो कलर, तो जा भी, राइट? सो that is the question it is asking. Are our manners better than before or worse? Manners, said a 19th century traveler, get regularly worse as you grow from east to west. Okay, it is bad in Asia, not so good in Europe, and altogether bad in western states of America. And now the east imitates the west. ठीक है? तो जहाँ हमें वेस्ट रे देखुछु सेटा ईस्ट को भी करिवार अछि, इंडिया हो कि हमर बाकी जते हमर एपट कंट्रीज अछि, राइट? So, have our laws offered the criminal too much protection against society and state? तो criminal को हमारा किसी rights of the accused, law students आउरी बोल रहे हैं rights of the criminal, okay, से गुड़ा सब अच्छी, the accused, even convict रो भी right अच्छी, okay? Article 21 कौन बोच कि right to life रे अपन करा गोटे निर्दिष्ट समय भीतर धरंतु जनको फांसी दंड दिया जाइछ, ओके? ताकू गोटे निर्दिष्ट समय भितर आपन को एग्जीक्यूट करियार अछि, ताकू फांसी दंड ताकू कन्विक्ट करालानी, ओके? ही हैज बीन कंडेम्ड फ्रॉम लेट्स से बिफोर 10-15 इयर्स, ए पर्यंत ड्यू टू वेरियस रीजंस से मर्सी पिटिशन पकेची, प्रेसिडेंट बसचंती 15 वर्ष से किछि करना, ओके? तो ना आपको फांसी दंड दिया ही पाउची, ना आपको छड़ा दे पाउची, जेल रे अछि 15 वर्ष, राइट? सेटा अगेंस्ट 21 सुप्रीम कोर्ट बहुत गुडे जजमेंट्स रे कहिसंती कि जदी अपन डिसाइड करछंती कि ताको ओके एग्जीक्यूट करिवे ताले सेटा ओटे फास्ट एग्जीक्यूशन होला कथा, तार लास्ट लीगल रिकोर्स जोटा कि प्रेसिडेंट को से यू नो he would like to ask the president, okay, कि ताको छाड़ी दिया जाओ, ओके? तो जदी सेटा भी फेल हे गला, प्रेसिडेंट मना कर देले, ताले ये ताको एग्जीक्यूट कर दो, किंतु बहुत टाइम रे से मना करिया भी बहुत टाइम लगांती, ओके? व्हाटएवर, तो से जिनसरा से कहूची. And now the East imitates the West. However, laws offer the criminal too much protection against society and state. So many criminals, those who know these loopholes of law, सेमान तको exploit करूछन, सेमान easily जानि छथि कि हम आमे एया करिबो, ए क्राइम करिबो, एतिकी वर्ष रहिबो, तापर बाहर जिवो. एबे बेस्ट एग्जांपल नियंतु, एबे बिहार रे कोन हला, तो गोटे बहुत ही स्ट्रांग पॉलिटिशियन को बिहार गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तांकर सेठी जो जेल कोड को चेंज करके ताको 14 वर्ष, ओके? नॉर्मली कौन हो जाओ जहाँ को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की कौन दिया हुए एतिकी वर्ष पर ताको नॉर्मली से छाड़ दियंती, जो कंडक्ट करके ठीक थिबो. लाइफ इम्प्रिजनमेंट नॉर्मली जोटा कि मीन करिया कथा टिल डेथ मला पर्यंत से रहइबो, किंतु बहुत केसेस रे सेमती हुए, ओके? तो ये बाबू कौन करथिले, ये गोटे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को मार देथिले, ओके? ही हैड किल्ड ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो आउट बट एबे तो छाड़ देले, राइट? So law रे बहुत loopholes होती, से जिनसरा से पहुंचोची. However, laws offer the criminal too much protection against society and state. We have many news items in which a rapist is left on bail, he comes and again does the same heinous act, okay? Have we given ourselves more freedom than our intelligence can digest?
ठीक अछि एटा बहुत ही गोटे पर्टिनेंट क्वेश्चन ऑल राइट्स विदाउट ड्यूटीज विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटीज has the progress of philosophy since Descartes been a mistake through its failure to recognize the role of myth in the consolation and control of man. He that increaseth knowledge increaseth sorrow, and in much wisdom it must grieve. Okay, tamane kon jette beshi knowledge hobo apna di adu bi jani right bhalo jinsa bi jani kharab jinsa bi jani so kharab jinsa jette apun janibe apna मन आउरी sete कष्ट होबो ठीक अछि so se ase कहउचंदी कि he that increaseth okay Shakespearean English रे कि जदि आपण नॉलेज इंक्रीज करचंदी आपण दुख भी इंक्रीज करिवो विजडम जते आपण इंक्रीज करचंदी आपण को ग्रीव भी इंक्रीज करिवो ओके सो दिस इज द पैसेज बुझिबार ये टिके फिलोसॉफिकल साइड रो निया हेची बहुत बड़ पैसेज नो आठु भी बहुत बड़ पैसेज पड़ची राइट नाउ कम टू द क्वेश्चन नाउ एठी किछि हमर वर्ड्स दिया है कि 10 वर्ड लिखंतु 15 वर्ड लिखंतु 50 वर्ड लिखंतु बट नॉर्मल एटा 5 मार्क्स रो क्वेश्चन एटा ईच क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स किछि किछि एग्जाम से 6 मार्क्स रो भी थाए 5 to 6 मार्क्स भीतर ईच ओके आंसर आपन को दबार अछि आरो रूल कोन आरो खाली गोटे सिंपल तार क्वेश्चन रो नाटा कोन क्वेश्चन इज बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन you have read something you are able to understand it or not आपण ताकू comprehend करि परछथि कि नै सेडा हला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन okay so you comprehend you understand and you have to write the answer in your own words निज लैंग्वेज लिखिबे सेटा बहुत ही इंपोर्टेंट सिंपल लैंग्वेज लिखिबे ये तो बहुत ही केते जगह रे भलो वोकैबुलरी यूज करछि आपण जते सिंपल लैंग्वेज लिखिबे सेते अधिक मार्क मिले ओके बुझि परले तो पैसेज टा नाउ एठी मो गोटे आपण कथा कहबी सो मु दी प्रकार आंसर देछि आंसर क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 रो ओके गोटे स्टाइल रे आंसर अछि क्वेश्चन 3 4 5 रो आ गोटे स्टाइल रे आंसर अछि कंटेंट इज सेम बट प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट ओके बोथ आर एक्सेप्टेबल किंतु सेकंड टाइम जोटा कि पॉइंट्स लिखा होची सेटा बेसी एक्सेप्टेबल 3 4 5 जोटा दिया अछि आई टेल यू सो फर्स्ट कम टू क्वेश्चन 1 what does the author mean when he says our progress in science and technique has involved some tincture of evil with good okay some tincture of evil with good so एठी हमें पैराग्राफ फॉर्म रे लिखिबो ठीक अछि पैराग्राफ फॉर्म रे लिखिबो so whatever he has said that we have writing in our own words okay जदि आपण किछि कोट करूचंती पैसेज रु तले ये जेंति कहला व्हेन द ऑथर स्टेट्स ओके से ताकू कोटेशंस भीतर रखिला केबे भी डायरेक्टली अदरवाइज कॉपी पेस्ट करबेनी पैसेज यू विल नॉट गेट मार्क्स सपोज यू हैव टू रेफर लाइक ये रेफर करूची तले एम्ति कोटेशंस ओके व्हेन द ऑथर स्टेट्स आवर प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्निक हैज involved some tincture of good with evil he means that while advancements in science and technology have brought about positive changes and benefits they have also introduced or excavated माने बढ़े दबा okay excavated certain negative or harmful aspects in society essentially there is a mix or tincture of both beneficial and detrimental consequences that comes with progress okay for instance while technological advance provides comforts and convenience they might also weaken our physical stamina or moral integrity कहि कि सेटा से okay तो हमें खाली own words से सेटा लिखुछु similarly while science offers healing it can also be used for destructive purposes the author is highlighting the duality and unintended consequence of progress सबले मन रखिबे यदि पैराग्राफ फॉर्म में लिखिबे लास्ट लाइन टा गोटे समरी टाइप रो होबा ठीक अछि तो जेंति से एटी समराइज कला ऑथर इज हाइलाइटिंग द डुअलिटी एंड अनइंटेंडेड consequence of progress ओके बुझि परले सो ये तार लेंथ जति की हैला 30 40 वर्ड जति की सेति 5 मार्क में एति की बहुत हमको लिखा दरकार है 5 मार्क पे सेकंड क्वेश्चन अगेन वी आर यूजिंग द सेम फॉर्मेट थर्ड क्वेश्चन का हम पॉइंट्स से लिखियो ओके why does the writer feel that we at times envy our ancestors okay हम पूर्वज जो माने अछंती तांको से माने जा जा करचंती हमें मे बी सेति कर पारनु कि से माने बेटर हमटु बेसी खुशी रे थिले the writer feels that we might at times envy our ancestors because they lived in simpler times when life's pace was slower and information was less overwhelming specifically the passage mentions that our ancestors जदि पैसेज रु किछि मते कोट करिवार अछि रेफर करिवार अछि विदिन कोटेशन दियाबो peace was only gently distributed by the news of their village okay this contrasts with modern era
where there is a constant bombardment of news and information from around the globe, often leading to information overload and increased stress. In essence, the simplicity, slower pace, and limited scope of news from earlier times might seem appealing when compared to constant and often chaotic influx of information in modern age. Okay, why does the writer feel that? We at times envy our ancestors. So points लिखिले ठीक है better. Okay, तो केमिति points लिखिबा third question में point wise देखिबा. Why is the writer not happy about human beings making progress? The writer is not entirely dismissive of human progress, but तमने first में कहिदेलु कि से एमति कोनी कि progress टा खराब. He is not entirely dismissive of human progress, but he expresses reservations about its mixed consequences. Here are some reasons the writer isn't entirely happy about human progress that he points at. We need to follow this pattern. A pattern ta हमको ठीक है better. A 5 mark ru you can get like 4 marks. Okay, directly a pattern रे लिखिले. एथरे मते 3 रु अधिक मिलिबार ठीक है chances कम जदि मु ए टाइप रो गोटे माने paragraph form रे लिखिली. Okay, it will be concept same, but in points you are writing. Moral and physical degradation जोड़ा से लिखी. While there have been technological and scientific advancement, the writer feels that they might have led to decrease in our physical stamina and moral fiber. Dangers of science and technology. The advancement in science and technology have introduced as many potential dangers as benefits. For example, like we have improved means of transportation. Some use them for negative purpose like facilitating crime. Okay. Overwhelm and stress. The multiplication of our ability to receive news has potentially led to information overload, making some envy the simpler times of our ancestors. Okay. Social inequality. So, एबे गोटे Supreme Court रे गोटे माने गोटे case टे चली that is also सेटा से आधार बेले ताकू ये करा लानी. Thing is that can I have a Aadhaar card if I do not have a mobile? सेटा government strictly ताकू discourage करूची. Okay. ये बाबूजी जे केसटा करिसेंती सीए ताको कहया कथा कि मु मोबाइल यूज करिवि ताले एंड ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ता पासवर्ड आसु सब अछि. ओके, तो ताको बहुत टाइम पर्यंत सेतर हैरास करा हला कि दिया हबनी. फाइनली ही वाज गिवन. तो से केसटा पे अछि सुप्रीम कोर्ट, राइट? सो एई थ्रू मु से कांसेप्ट कहली, राइट? Simpler times of our ancestors. Then social inequality. Third point कहला, even the conditions have improved for certain sections of society, will still witness the persistence of dark ghettos and slums. A term that use kala सबले मन रखिए. You see, in reading comprehension, there is one type of question is your explicit questions. माने जोड़ा exactly देइची मोर paragraph रे से तारि ऊपर question पचाले. किछिटा implicit questions थे. सेटा exactly देइ न थे passage. ठीक है, तो से hint टा से तुर आपण बाहर करिकि extrapolate करिकि ताको बाहर करिया पड़िबे आंसर. तो एटी social inequalities जेहेतु से ghetto तो slums टा use करिची passage रे, तो author ताको देले. Questionable moral progress. The writer is concerned about the degradation of values. We may have moved away from theology. तो क्षेत्र की असुविधा नहीं. ताको आगे कोन आगुरु religion or religious virtues, what your religion teaches. Okay, तारो बहुत important कोटे प्रभाव थिला जोडक लाइफ ऊपर, जोडा कि आस्ते आस्ते कमी गला. There is no robust moral code that prevents greed, crime and promiscuity. Okay, then transfer of intolerances. The writer questions if we have truly outgrown intolerance or merely shifted it from religious biases to national, ideological or racial hostilities. Then misplaced freedom. The idea that perhaps we have given ourselves more freedom than we can handle responsibly, especially considering the protections offered to criminals and potential negative impacts on society. Okay, तापर एतिक देला परे गोटे लाइन सबल ताको समराइज कर देबे. In summary, while the writer recognizes the advancements humans have made, he is concerned about the unaddressed or exacerbated moral and societal issues that have accompanied this progress. Okay, so a style रे लिखिबार अछि. आपन तीनटा पॉइंट अछि, तीनटा पॉइंट एई पॉइंट वाइज लिखिबे, सबहेडिंग देबे, तापर गोटे लाइन कि दी लाइन रो एक्सप्लेनेशन देबे. Okay, this is the pattern which you have to follow, and if you are following this, out of 5 marks you can get 4 mark आपण पाइ परिबे. Okay, next question, question number 4. What does the writer feel that, why does the writer feel that people living in Middle Ages and Renaissance might have been wiser than us? Okay, so model answer kono chi. The writer suggests that people living in Middle Ages and Renaissance might have been wiser than us because they stressed mythology and art rather than science and power.
this emphasizes this emphasis indicates a different set of values and priorities. Value of art and mythology in those periods. Art and mythology played significant roles in shaping culture, providing meaning and connecting people to their roots. Okay. They emphasized human experience, emotions, and the spiritual or metaphysical aspect of existence. जोटा कि एबे आमे ताको more into secular or universal values को नेलोनी. Simple instrumentalities. The writer point out that modern societies have repeatedly enlarged its instrumentalities. Instrumentalities called tool, technologies, means of achieving goals, etc. without necessarily improving its purpose or intention. Intention की purpose किसी better कराएनी, किंबा change कराएनी. किंतु the ways, tools, technologies, means of achieving those things, ताको हमें बढ़ाई चलो. The Middle Ages and the Renaissance, with their simpler tools, might have had a clear sense of purpose. Okay, clearer sense of purpose. And more direct means of achieving their goals. Potential critique of power by contrasting the focus on science and power with mythology and art. It implicit jinsota. It exactly the okay. Say directly कहूना as a student, okay, as a candidate in the examination, आपको okay. ताको से जहाँ imply करूँगी ताको बाहर करके लिखियर अच्छु. The writer implies that an undue emphasis on power and technological advancement at the expense of cultural and spiritual enrichment might be less wise in the long run. ठीक है, तीनटा points से देना. In essence, the writer believes the focus of Middle Ages and Renaissance art, mythology, and human experience might have provided a more holistic and meaningful approach to life compared to the modern era's emphasis on technological advancement and the pursuit of power. Okay. Last question. Why does the author think that Francis Bacon's motto, knowledge is power, is inadequate? The writer views Francis Bacon's motto, knowledge is power, is inadequate because in the context of the passage, it is very important. Age of phrase in the context of the passage. So, it is inadequate. While knowledge, especially scientific and technological, has certainly empowered humanity in many ways, it hasn't always been used for positive or constructive purposes. The writer notes the following: neutrality of science. The discovery that science is neutral means that while it can heal, it can also kill. Okay, it can build, but it can also destroy. Science in itself doesn't inherently lean towards moral good. Okay, so science से अपन को बाटरा देखो जेबे से अपन केमती से टेक्निक टा यूज करछन भलो पे खराब पे सेटा जे यूज करछ साइंस ता ऊपर डिपेंड करछ. It's a tool that can be wielded for both beneficial and harmful ends. तापर misuse of knowledge. Technological advancement, a product of knowledge, can be used in detrimental ways. For example, while we have developed incredible means of locomotion, they can also be used to facilitate crime or cause harm. Loss of moral and ethical grounding. The passage suggests that in pursuit of knowledge and power it brings, we might have lost sight of moral and ethical consideration. There is a concern about whether our moral progress has kept pace with our technological advancements. Okay, moral progress टिके पछको पड़ जाइछि, technological advancement बहुत आगु पड़ जाइछि. In light of these reflections, while knowledge doesn't grant power, the motto is seen as inadequate because knowledge does grant power. The motto is seen as inadequate because it does not address the responsibility, moral implications, or the potential misuse of that power. The writer underscores the need of knowledge to be complemented by wisdom, ethics, and sense of purpose. Okay. So knowledge is power. ठीक अछि, but से knowledge सहित जेतु सेटा आपन का बुझाई कि power दबा ता सहित knowledge has to be complemented by wisdom, ethics, and sense of purpose. बुझिपाले. So एई 3 4 5 रे जो पैटर्न टा यूज हेछि मोर तीनटा पॉइंट थिला, मु तीनटा पॉइंट लिखिले गोटे छोटा ओके तार कंक्लूजन टे देली. तो एई पैटर्न टा फॉलो करंतु. दिस इज रिक्वायर्ड तरे 4 मार्क्स मोर गारंटीड अछि. ओके, इंस्टेड ऑफ 1 and 2 जोटा कि मैक्सिमम पिला यूज कर. ओके, कंटेंट यार भी ठीक अछि. 1 और 2 रो कंटेंट इज फाइन, बट हमको पैटर्न टा चेंज कर. बुझिपाले. सो एबे जेतले हमें नेक्स्ट डिस्कस करिवो नेक्स्ट पार्ट टा कि जो आपनकर वेरियस प्रीवियस क्वेश्चंस हला कि जो क्वेश्चन शीट्स रो दिया हिची आपनकर ऐप रे सेगुडा बितले सॉल्व करिवे. एई पॉइंट्स रा देखिए सॉल्व करिवे. ओके, डू नॉट राइट like it has been written in 1 and 2.
try to write 1 and 2 भले लिखने को मतलब मार्क मिलिबनी तो 5 रु 3 मिलिबो मु लिखिबि पूरा ठीक तो आई विल गेट बट आई लूज 1 मार्क ना तो सेही हिसाब रे मते 3 4 5 रे जो पैटर्न टा फॉलो करा हला सेटा को देखिबार अछि अंडरस्टूड राइट एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस दीटा ही जिनस मन रखियार अछि नंबर 1 निजो वर्ड्स लिखिबे सेकंड हला पॉइंट्स लिखिबे ओके okay fine so we'll stop here then